बरतानवी दारुल उमरा या हाउस ऑफ लॉर्ड्स की रुकन और कंजर्वेटिव पार्टी की साबिक को चेयरवुमन सईदा वारसी ने कहा है कि जो कुछ हमने 2002 में नरेंद्र मोदी को बतौर वजीर आला गुजरात में करते देखा था, अब हम उनके बतौर वजीर आजम वही खेल पूरे भारत में खेलता देख रहे हैं। हाउस ऑफ लॉर्ड्स को ब्रीफिंग देते हुए उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी को गुजरात का कसाई करार दिया जा रहा है और अमेरिका समेत बहुत से मुल्कों ने उन पर सफरी पाबंदियां आयद कर दी थी, जबकि हमने भी बरतानिया में उनका मुकम्मल बायकाट किया था, जो कि बिल्कुल दुरुस्त अमल था। उन्होंने कहा कि भारत भर में हुजूमी तशद्दुद से मसीही, मुस्लिम, सिख और दलित बरादरियों के लोगों को कत्ल करना, उन्हें इम्तियाजी सलूक का निशाना बनाना, घरों को नजर आतिश और बुलडोज करना, खवातीन की आबरूरेजी करना, इबादत गाहों की बेहुरमती, अकलियत कुछ कवानीन का इतलाक करना, मजहब की बुनियाद पर कारोबार करना और यहाँ तक कि मदर टेरेसा और उनके काम को ईसाई साजिश के तौर पर पेश करना जैसी कार्रवाइयाँ खुले आम की जा रही हैं। सईदा वारसी ने मजीद क्या कहा, मुलाहिजा कीजिए। A leaked report at the time by the British High Commission in New Delhi specifically blamed the violence on the Chief Minister Modi and his government. It led to Narendra Modi being described as the butcher of Gujarat, with travel bans imposed on him by many, including the United States, whilst we in Britain imposed a total boycott of Modi, refusing to engage with him for a decade. Our collective assessment of and response to Modi was right at the time. We are right to engage the Prime Minister of India, whoever that may happen to be. India is a country of 1.4 billion, a rising economy, an important trade partner, and a secular and diverse nation with an important and valued diaspora in Britain. My Lords, India is not Modi, but more importantly, Modi is not what India was envisaged to be. My Lords, Hindutva is not Hinduism. The great faith of Hinduism, one of the oldest religions in the world, practiced for thousands of years, rooted in spirituality, is one that has always coexisted with other beliefs. Hindutva, on the other hand, diminishes plural secular societies. It is a political, violent ideology. From the late 80s, my lords, what we saw play out in Gujarat 2002 under Chief Minister Modi, we are now tragically seeing play out across India under Prime Minister Modi. From lynchings to burnings of home, lootings to rape, the ideology of Hindutva and its promoters has attracted widespread criticism from Indian civil society committed to a secular state as enshrined in the Indian constitution. Discrimination and harassment of Christian, Muslim, Sikh and Dalit communities, attacks on those in interfaith marriages, the passing of anti-conversion and citizenship amendment laws, targeted killings, burning and bulldozing of minority homes, desecrations of places of worship, boycott of businesses based on religion, and even citing Mother Teresa and her work as a Christian conspiracy are now mainstream.